Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter Brick, Beats and Bones. My dear student, I hope there is no need to explain that ki brick, beats and bones. It means we are going to study about the chapter Indus Valley Civilization. But in this chapter, we studied the various topic like origin, like trade, like economic expansion. I mean to say that foreign trade, like religion, script, town planning, burials, luxurious life, and the other topics also we discussed in this class. Today we will try to understand the next topic, that is decline of Indus Valley civilization. Decline of Indus Valley civilization. In your history book, point 9, it is given the point 9. The topic is the end of the civilization. The end of the civilization. Okay. Both topic is equal. We are saying here the different, I mean to say that different way, the different sentence हम दो सेंटेंस में एक ही बात कर रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन and decline of Indus Valley civilization, what we are going to read. My dear student, it is the very interesting matter that as we know that this civilization was widespread in the whole Indian continent, from Afghanistan to the India, UP, from Maharashtra to Jammu and Kashmir, from Sutkagendur, Iran to the Vanavali, Haryana, Hisar. It means हमारे पास एक लंबा स्ट्रक्चर है इंडस का. सपोज कहाँ कहाँ से कितनी दूर तक ये कल्चर डेवलप है. आप देखिए, अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रिमेंबर दैट आई शो यू अ मैप, इंडिया मैप. आई होप ये मैप आपको आसानी से दिख रहा होगा. ओके, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोरतुगुई, सूतकागेंदोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर,
मांडा, Daimabad. So, my dear student, why I am showing this map? इन मैप को देखिए, दिस इज द एरिया, आई मीन टू से दैट ये पूरा क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का था. देयर होल एरिया वाज इतने बड़े क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था. देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट रिसर्च इट बिकम किलोमीटर स्क्वायर. सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 13,99,600 किलोमीटर, 13,99,600 kilometers square. And similarly, nowadays, the recent research explain that there is mention nowadays the 15,20,000. ये इतने बड़े एरिया में ये सभ्यता फैली हुई थी. तो सिमिलरली the both, I mean to say that I am telling, as you know that we had studied in our class the topic origin of this civilization, origin of this civilization topic, where I discussed you that it was the very disputed matter कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ. हाउ कैन द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज केम इनटू इन प्रॉपर वे, कैसे आई, कैसे सभ्यता विकसित हुई. तो मैंने कहा था कि यहाँ भी दो मत थे. सम स्टूडेंट बिलीव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर ओरिजिन डायरेक्ट रिलेटेड विद द फॉरेन ओरिजिन्स, एंड अदर हु बिलीव दैट द नेटिव ओरिजिन्स. मैंने आपको यहाँ पे दो पार्ट में बांटा था और मैंने कहा था फॉरेन ओरिजिन एंड सेकेंड नेटिव ओरिजिन. दिस वाज तो ये मैटर क्लियर था, जहां मैंने कहा था कि अब यहाँ पे भी एक लंबा डिस्प्यूट, एक लंबी समस्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, फॉरेन ओरिजिन थी या नेटिव ओरिजिन थी. और फिर इसमें लंबी चर्चाएं चली. किसी ने कहा कि ये मेसोपोटामिया से संबंधित थी, मेसोपोटामिया की कॉलोनी रही होगी, मार्टिमर ब्लेड जैसे विद्वान. फिर भारतीय विद्वानों ने कहा कि नहीं, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा कि नहीं, भारत की सभ्यता का उद्भव और विकास भारत के किसी नेटिव सिविलाइजेशन से हुआ होगा, भारत के किसी नेटिव कल्चर से हुआ होगा, भारतीय संस्कृति से इसका विस्तार हुआ. और फिर तमाम सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे जिसके आधार पर इतिहासकारों ने प्रूव किया कि इसकी नेटिव जो ओरिजिन है इट वुड बी बेटर देन द फॉरेन ओरिजिन. सो nowadays the historians, the modern historians, they believe that the Indus Valley civilization origin that belongs to their natives, but it was very conflicted, as well as the matter end of this civilization, same end of or decline of this civilization. Also disputed and conflicted. ये जो
ये विचारधारा है, ये भी एक महत्वपूर्ण डिस्प्यूटेड और कन्फ्लिक्टिव है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दैट the different historian believe the different view, different thought of the decline of this civilization. कौन से thought? Someone believe that Indus Valley civilization declined what? Outsiders attack. Outsiders attack. First, second, flood, third, ruin of administration, third, fourth, abolish trade, that was what? Abolish or destroyed. Fourth, fifth, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फ्लड हो गया, आउटसाइड अटैक्स हो गए, ट्रेड हो गए, क्लाइमेटिक चेंज, others, 5, others, geological change, 6, overuses of resource, 7, सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें तो मैंने कहा कि ये तमाम सारे रीजन्स थे, इसके अलावा भी और भी सारे रीजन्स थे जिसको हम काउंट कर सकते हैं. वी कैन टेक हाउ मेनी 0.5, 6, 7, 8 पॉइंट्स यहां लेते हैं. आप यहां देखिए 8 पॉइंट आ जाएगा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन दिस ऑल पॉइंट्स. मैं एक बार फिर इसको लिखने जा रहा हूं, आप एक बार फिर से देखिए क्या क्या रीजन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के. तो ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. 1 by 1 you can easily understand. There were the different hypotheses given by historians. First, what? Flood. Second, that was outsiders attack. Third, rule, administration, that was rule, बर्बाद हो गया था. एडमिनिस्ट्रेशन, that was fourth, climatic, reason. Fifth, river change their courses.
6 the trade that was व्यापारिक गतिरोध ट्रेड दैट वाज फिनिश्ड ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्स over usage of resource, then after 5th 6th 7th 8th fire 9 fire geological reason 10th epidemic 10 epidemic my dear student 10 epidemic my dear student sorry epidemic okay these are the points on the basis of we can explain that the decline of Indus Valley civilization having seen that points you can also analysis that only one region that was not behind the decline of Indus Valley civilization सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं रहा होगा कहता है there is evidence that by 800 BC most of the mature Harappan site in the region such as Cholistan had been abandoned. The simultaneously there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and western Uttar Pradesh. Why? Here अब यहाँ पे कई सारी बातें कहते हैं what author try to give you evidence that during 1800 BCE the huge amount of population they migrated from the city of the Harappan civilizations 1800 के बाद एक बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ सिटी माइग्रेट बहुत सारे पीपुल माइग्रेट किए कहां से एक रीजन से दूसरे रीजन कहता है कहां से हरप्पा साइट्स इन रीजन्स सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबंडन्ड साइमल्टेनियसली देयर वाज चोलिस्तान से एक एविडेंस मिला हमको कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट किए एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक जगह से कहता है कि चोलिस्तान से कहते हैं यहां से मूव करते हैं कहां पहुंचते हैं पंजाब कहां पहुंचते हैं गुजरात कहां पहुंचते हैं यूपी दिस 1 दिस 2 एंड दिस 3 कहता है कि बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ इस जगह से 1800 BC में और ये लोग माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ मूव किए लेकिन चोलिस्तान से ये लोग मूव करते हुए ये लोग गुजरात उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में आकर बस गए हरियाणा के क्षेत्रों में आके बस गए तो ये माइग्रेशन क्यों हुआ कहता है इन द फ्यू हरप्पन साइट्स दैट कंटिन्यूड
to be occupied after 1900 BC. There appeared to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifacts of the civilization. Weight, seal, special breeds, writings, long distance trade, and craft specialization also disappeared. In general, far the fewer materials were used to make far fewer materials were used to make far fewer things. House construction technique destroyed and large public structure were no longer produced. Overall, artifacts and settlements indicate a rural way of life in what are called late Harappan or successor culture. What brought about this change? The several explanations have been put forwarded. The several explanations have been put forwarded. These are the several explanations which I mentioned on board. Flood. Due to that, industrial civilization declined. It may be possible according to some historians. They tried to prove that industrial civilization declined because of some archaeological findings that was found out from the different site of Indus Valley. The other outsider attacks, the Aryans attack. In other words, you can say the Aryans attack. Third administration that was going wrong, धीरे धीरे वो बर्बाद हो रहा था. Climatic reason, the river changed their courses. Trade that was finished, overusage of the resource, fire, geological changes, and epidemics. And not only the only 10, but accepted the other points, other explanation have been put forwarded. These range from the climatic change, deforestation. Yes, one more thing you can mention 11. Deforestation. Eleven regions. कहता है कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, बड़े पैमाने पे जंगल भी काटे गए और ये भी एक कारण था. अब इन सारे रीजन्स को देखिए. कहता है author clearly explain about the decline of Indus Valley civilization. Author tried to inform you that was not only one reason behind the decline of this whole civilization. That this rain from climate change, the several explanations have been put forwarded. These range from climatic change, deforestation, excessive floods, shifting and or dying up rivers to overuses of the landscape. Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. It appears that a strong unifying elements, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evidenced by the disappearance of the seals, the script, distinctive beads, pottery, the shift from the standardized weight system to the use of local weight, and the decline and the abandonment of the cities. The subcontinent would have to wait for over a millennium for a new cities to develop in completely different region. My dear student, this is the very clear-cut information given by author that the weight and measurement system
the specialization of the things which was made by the Indus Valley civilization, it was not found after 1800 or after some time ago, some time later. The houses, the town planning, it was not shown in later period. So on the basis of that, we can say the whole Indus Valley civilizations was disappeared. According to some historians, according to the different historians, given the different view about the decline of Indus Valley civilization. कहता है कि अगर इन चीज़ों को बात करें, इफ़ यू विल माइनटली ऑब्जर्व अबाउट दैट द रीजन कि जो बदलाव हुआ, ये क्यों हुआ? हड़प्पा सभ्यता के विनाश, इंडस वैली सिविलाइजेशन के विनाश, उसके अंत की समस्या पर अगर पुनर्विचार के पूर्व में कुछ प्रचलित धारणाओं पर विचार करना हमें चाहिए। उनके विनाश के लिए जो प्रमुख कारण दिए गए हैं वे बाह्य आक्रमण है, एक्सेसिव फ्लड है, भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेटिक चेंज, प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक दोहन, ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्स, और फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाढ़, अकाल, यस फेमाइन भी कह सकते हैं, वाणिज्य व्यापार में गिरावट। एक और पॉइंट्स आप यहां मेंशन कर सकते हैं। व्हाट पॉइंट्स? द फेमाइन, क्या पढ़ा? अकाल आए, फेमाइन आल्सो। अब यहां पे मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट 12, फेमाइन, अकाल। तो इस तरीके से हमने यहां पे 12 रीजन डिस्कस किए। On the basis of that, you can easily understand that why, how and why the Indus Valley civilization that was declined. क्यों Indus Valley civilization decline हुआ? एक बड़े क्षेत्र पे फैली हुई सभ्यता एकाएक कैसे नष्ट हो गई? That is the main point, my dear student. You should observe about all the things. आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है. First, what you have to write down on your copy, write down on your paper, that the things, the evidence which proved that the huge amount of the migration that was done during 1800 BC from Cholistan to where the eastern portion of the Indian continent, I mean to say that the Gujarat, I mean to say that the Uttar Pradesh, Haryana. It proved that कि after some time, after 1800, the old city that was what? कि ये अपने क्षेत्र को, अपने विशेषताओं को खो चुके थे। वो उन अपनी विशेषताओं, सभ्यताओं और अपनी महत्ताओं को खो चुके थे। We have evidences that it means the which historian given that view, the flood, they have their own explanation. Who said the outsider attacks or attacks region of Indus Valley civilization? They had their own explanation. Administration that was rule. They explained according to the different way. And the climatic change, the river change, their courses, trade that was finished, overuse of the resources, fire, geological regions, epidemic, deforestation, famine. These are all points you can mention. And on the basis of that you can easily explain. तो आज के लिए इतना ही. In next class, I will try to explain the some topics which I mentioned here, the decline of the Indus Valley civilization, and on that day we will try to finish, we will try to complete your chapter, the last point, the Cunningham confusion. तो आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.